Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello aspirants, welcome to Goodness Sutra. So we shall continue from where we left. We are studying chapter 24, right? Post-war national scenario. So let's begin. यहाँ से basically INA trials पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. तो कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन एंड INA ट्रायल्स, ठीक है. स्टेट पीएससी यूपीएससी में पूछा जाता रहता है जब चाहे, तो आप इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए 2 स्टार और फिर आगे बढ़ेंगे. इलेक्शंस वर हेल्ड इन द विंटर ऑफ 1945 to 46. इलेक्शन कैंपेन फॉर द नेशनलिस्टिक एम, ठीक है. 1945 से 46 में इलेक्शन हुए थे. अब देखते हैं नेशनल इलेक्शन कैंपेन फॉर नेशनलिस्टिक एम. द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर of the election campaign was that it sought to mobilize the Indians against the British. It did not just appeal to the people for votes. The election campaign expressed the nationalistic sentiments against the state repression of the 1942 Quit India upsurge. This was done by glorifying martyrs and condemning officials. The brave resistance of the leaderless people had been lauded. Martyrs' memorial were set up. Relief funds were collected for sufferers. The officials responsible for causing pain were condemned, and the promises of inquiry and threat of punishment to guilty officials were spelled out. The government failed to check such speeches. This had a devastating effect on the morale of the services. The prospect of the return of the Congress ministers, especially in the especially in those provinces where repression had been the most brutal, further heightened the fear of those in government services. A gentleman's agreement with the Congress seemed necessary to the government. Mass pressure against the trial of INA prisoners of war, PWs मतलब prisoners of war, sometimes described as an edge of volcano, brought about a decisive shift in the government policy. The British had initially decided to hold public trials of several hundred INA prisoners, besides dismissing them from services and detaining without trial around 7,000 of them. They compounded the folly by holding the first trial at the Red Fort in Delhi in November 1945 and putting on dock together a Hindu, Prem Kumar Sehgal, a Muslim, Shah Nawaz Khan, and a Sikh, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है ना. यहाँ पे ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने आगे चल के, और इनको बेसिकली ये कंपाउंडेड फॉली बाय होल्डिंग द फर्स्ट ट्रायल इन द रेड फोर्ट पे ये पहला ट्रायल हुआ था. तो कौन है? प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान एंड सिख गुरबाज सिंह ढिल्लन, राइट. सो देख रहे हैं आप, ये 3 जो नाम आपने पढ़े हैं ना अभी, ये काफ़ी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन. क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है. PYQ है. तीनों नाम पूछे थे इन द केस ऑफ नेशनल मूवमेंट. प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लन, हु वर दे, इनका सीधा पूछा था. तो भाई इनका आईएनए का पहला ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट से, इन तीनों का, ठीक है ना. तो ये याद रखेंगे आप, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है. Another issue was, सीधे नाम पूछा था, ठीक है ना, डायरेक्ट. Another issue was provided by the use of Indian Army units in the bid to restore French and Dutch colonial rule in Vietnam and Indonesia. This enhanced the anti-imperialistic feeling among the section of urban population and the army, right. अब कांग्रेस सपोर्ट फॉर INA prisoners, कांग्रेस ने कैसे सपोर्ट किया होगा, तो बेसिकली वही बताया गया है और ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना. At the first post-war Congress session in September 1945 at Bombay. September 1945 में बॉम्बे में हुआ था कांग्रेस का सेशन. A strong resolution was adopted declaring Congress support for the INA cause. Congress supported for the INA cause, ठीक है ना. Defense of INA prisoners in the court was organized by Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapru, Kailash Nath Khatju, Jawaharlal Nehru and Asaf Ali. INA Relief and Inquiry Committee distributed
small sums of money and food and helped arrange employment for the affected. Fund collection was organized. तो बेसिकली ऐसे किया है कांग्रेस ने सपोर्ट, ठीक है ना. अब INA allegations, INA agitation, a landmark on many counts. The high pitch and intensity at which the campaign for the release of INA prisoners was conducted was unprecedented. The agitation got wide publicity through extensive press coverage with daily editorials, distribution of pamphlets often containing threats of revenge, graffiti conveying similar messages, holding of public meetings and celebration of INA Day, that was November 12, 1945. INA Day को मतलब ये है INA Day, ठीक है ना, जो उस टाइम पे मनाया गया. एंड INA वीक वॉज नवंबर 5 to 11, ठीक है ना. ये याद रखेंगे, ये सब डिटेल्स, छोटी डिटेल्स स्टेट PSC में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना. The campaign spread over a wide area of a country and witnessed the participation of diverse social groups and political parties. While the nerve center of the agitation were Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and United Province and towns in Punjab, the campaign spread in distant places such as Kurg, Balochistan, Assam. The form of participation included fund contribution made by many people, from film star, municipal committees, Indians living abroad and Gurudwaras to Togawala's participation in the meeting, shopkeeper closing shops, political groups demanding release of prisoners, contribution to INA funds, student meeting and boycott of classes, organizing Kisan conference and all India women conference demanding the release of INA prisoners. Like जितने भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे सब सपोर्ट कर रहे थे, बेसिकली सभी कर रहे थे. बट देखिए, दोज हु सपोर्टेड INA cause in varying degrees apart from the Congress included Muslim League, Communist Party, Unionist, Akali Justice Party, Arhars in Rawalpindi and राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा एंड सिख लीग, ठीक है. अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई. इतने सारे मतलब लगभग सब ने किया है सपोर्ट, बेसिकली ऐसा कोई बचा नहीं जैसे सपोर्ट नहीं किया हुआ. ऑल सपोर्टेड. प्रो INA सेंटिमेंट सरफेस्ड इन ट्रेडिशनल बुलवाक ऑफ द राज government employee collected funds. The loyalists, the gentlemen with titles, appealed to the government to abandon the trial for good Indo-British relation. Men of the armed forces were unexpectedly sympathetic and attended meeting received those released often in uniform and contributed funds. The central theme became the question of the Britain's right to decide matter concerning Indians. Britain realized the political significance of INA issue, which with each day assumed more and more of an Indian versus British color. ठीक है. अब पढ़ते हैं 3 अपसर्ज हुए थे विंटर ऑफ 1945 से 46 के बीच में, ठीक है. इन अपसर्जेस के बारे में कंटिन्यूसली पूछा गया है स्टेट PSC में मल्टीपल टाइम, ठीक है ना. तो आप इसको इंपॉर्टेंट समझ के भाई हाईलाइट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना, और उसके हिसाब से पढ़ेंगे. और इस वाले के क्योंकि UPSC में आए तो उसको भी 3 स्टार मार्क करिएगा, ठीक है. ओके, अब पढ़ते हैं 3 अपसर्जेस विंटर ऑफ 1945 से 46. द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट which released a crescendo around the INA trial developed into violent confrontation with the authority in the winter of 1945-46. There were 3 major upsurges. November 21st, 1945 में Calcutta over INA trials. November 11, 46 में in Calcutta against the 7-year sentence of INA officer Rashid Ali, ठीक है. और तीसरा क्या था, February 18, 1946 में in Bombay, ठीक है. तीनों इंपॉर्टेंट है. स्ट्राइक ऑफ रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स, ठीक है ना. ये तीनों थे मेजर अपसर्जेस. इन सब के बिहाफ पे फिर ट्रायल स्टार्ट हुआ. 3 स्टेज पैटर्न. ऑल 3 अपसर्जेस शोड अ सिमिलर 3 स्टेज पैटर्न. व्हेन अ ग्रुप डिफाइज अथॉरिटी एंड इज रिप्रेस्ड, स्टेज 1 है ना. पहले डिफाइंस ऑफ द अथॉरिटी एंड इज रिप्रेस्ड. The first instances of the stage, November 21st, 1945, a student procession comprising some forward bloc sympathizers, Student Federation of India activists, and Islamic College students who had joined up with the League and the Congress, tied flag as a symbol of anti-imperialistic unity, marched at Dalhousie Square, the seat of government in Calcutta. These protesters refused to decipher and were lathi charged. The retaliation by throwing stones and they retaliated by throwing stone and brickbats. The police resorted to firing, in which 2 persons died. In the next step, February 11, 1946, the protests was led by Muslim League students, in which some Congress and Communist students organizations joined. Some arrests provoked the students to defy Section 144. There were more arrests and the agitating students were lathi charged. Rebellion by naval rating. On February 18, 1946, some 1100 Royal Indian Navy rating an HIMIS Talwar went on a strike to protest against racial discrimination, demanding equal pay for Indians and white soldiers, unpalatable food,
abuse by superior officers, arrest of rating for scrolling, quit India and HMIS on HMIS Talwar, INA trials, use of Indian troops in Indonesia demanding their withdrawal. देखिए ये जो है ना रॉयल इंडियन नेवी जो HMIS तलवार पे इसके ऊपर एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, तो अब इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको आप उसी हिसाब से पढ़ेंगे, राइट। ओके, द रेबेलियस रेटिंग यहाँ पे भी 3 स्टार कर लीजिए क्योंकि यूपीएससी में भी आ ही चुका है, ठीक है ना। ओके, the rebellious rating hosted the Tricolor, Crescent and the Hammer and Sickle flag on the mast of the rebel fleet. Other ratings soon joined and they went around Bombay in lorries holding Congress flag, threatening Europe and policemen. Crowds brought food to the rating and the shopkeepers invited them to take whatever they need. Stage 2 क्या हुआ? When the city people joined. This phase was marked by virulent anti-British mood resulting in the virtual paralysis of Calcutta and Bombay. There were meeting, processions, strikes, hartals and attacks on European police stations, shops, trams, depots, railway station, bank, beside stopping of rail and road traffic by squatting on tracks and barricading the streets. Stage 3 क्या रही होगी? ठीक है, अभी एक सेकेंड। Okay, stage 3 when people on the other part of the country expresses sympathy and solidarity. While the student boycotted classes and organized hartals and processions to express sympathy with the other students and the ratings, there were sympathetic strikes in military establishment in Karachi, Madras, Visakhapatnam, Calcutta, Delhi, Cochin, Jamnagar, Andaman, Bahrain and Aden. There were strikes by Royal India Air Force in Bombay, Pune, Calcutta, Jessore and Ambala. ठीक है ना। Patel and Jinnah persuaded the rating to surrender in February 23 with an assurance that national parties would prevent any victimization. ठीक है ना। अब देखिए पटेल एंड जिन्ना परसुएटेड, ये इंपॉर्टेंट है, रेटिंग टू सरेंडर, इन लोगों ने सरेंडर करने के बोला कि भाई आपके ज़्यादा ट्रायल वाया तो ज़्यादा विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। अब एवेल्युएशन ऑफ द पोटेंशियल एंड इम्पैक्ट ऑफ द 3 अपसर्जेस, ठीक है ना। ओके, क्या क्या अपसर्ज का इम्पैक्ट रहा वो यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है बेसिकली, है ना, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज वाला पार्ट है, फिर अपन उसको आगे पढ़ के देखेंगे, ठीक है। The 3 upsurges were significant in many ways. Fearless action by the masses was an expression of the militancy in the popular mind. Revolt in the armed forces had a great liberating effect on the minds of the people. The RIN revolt was seen as an event marking the end of the British rule. These upsurges prompted the British to extend some concessions. पहला था on December 1st, 1946, the government announced that only those INA members accused of murder or brutal treatment of fellow prisoners would be brought to trial. पहला तो ये था। Imprisonment, यही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। Imprisonment sentence passed against the first batch were remitted in January 1947. Indian soldiers were withdrawn from Indochina and Indonesia by February 1947. The decision to send parliamentary delegation to the India was taken. Basically, okay, the decision to send cabinet mission was taken, ठीक है, cabinet mission was taken, important है। Okay, ये इसका आफ्टर मैथ था, ठीक है। Cabinet mission was taken in January 1946. But could the communal unity witnessed during these events, if built upon, had offered a way out of the communal deadlock, or in other words, what was the potential of these upsurges? These upsurges were in the nature of direct and violent conflict with authorities, which had obvious limitations. Only the most militant section could participate. These upsurges were short-lived and were confined to few urban centers, while the general INA agitation reached the remotest villages. Communal unity witnessed was more organizational than a unity among the people. Muslim ratings went to the League to seek advice, and the rest to the Congress and the Socialists. Despite considerable erosion of the morale of the bureaucracy, the British infrastructure to repress was intact. They were soon able to control the situation. It was a Maratha battalion in Bombay that rounded up the rating and resorted them to their barracks. Congress strategy. अब कांग्रेस ने क्या किया होगा वो पढ़ते हैं. The leftists claim that the Congress indifference to the revolutionary situation arose because of 2 considerations. पहली क्या थी? That the situation would go out of the control and that the disciplined armed forces were vital in the free India. They also claim that if the Congress leaders had not surrendered to power play, a different path of independence would have been emerged, but actually these upsurges were an extension of the earlier nationalist activity fostered by the Congress through its election campaign, its advocacy of the INA cause, and a highlighting of the excess of 1942. These upsurges were distinguishable from the earlier activity because of their form of articulation. These were violent challenges to the authority, while the earlier activities was a peaceful demonstration to the national leadership.
The Congress did not officially, देखिए important है, the Congress did not officially support these upsurges because of the tactic and the timing. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको प्रीलिम्स वगैरह में डायरेक्ट पूछा जाता है. नेगोशिएशन हैड बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेटेजी टू बी एक्सप्लोर्ड बिफोर अ मास मूवमेंट कुड बी लॉन्च, स्पेशली व्हेन द ब्रिटिश वर सीन टू बी प्रिपेयरिंग टू लीव सून. इन गांधीज ओपिनियन म्यूटनी वाज बैडली एडवाइज्ड. गांधी जी ने भी बोला है यही चीज़. गांधी का ओपिनियन क्या है ना, बैड नहीं है. इफ दे म्यूटेंड फॉर इंडियाज फ्रीडम दे वर डबली रॉन्ग. इफ दे हैड अ ग्रीवांस दे शुड हैव वेटेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द लीडर. ठीक है ना. अब इलेक्शन रिजल्ट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये मल्टीपल टाइम स्टेट पीएससीज में भी वगैरह वगैरह पूछ लेते, कई बार एक बार यूपीएससी में पूछा होगा. ठीक है, देखते हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस. इट गॉट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स. देख रहे हैं. It captured 57 out of 102 seats in the Central Assembly. In the provincial election, it got a majority in most provinces except Bengal, Sindh and Punjab. Again, same है वो. The Congress majority provinces include the Northwest Frontier Province and Assam, which were being claimed for Pakistan. The Congress majority आई थी यहाँ पे. ठीक है ना, यहाँ पे majority थी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ेंगे आप. अब पढ़ते हैं मुस्लिम लीग की क्या परफॉर्मेंस रही होगी, है ना, ये भी पूछ लिया है भाई, देख लीजिए. It got 86.6% of the Muslim votes. It captured 30% reserved seat in the Central Assembly. In the provincial election, it got a majority of Bengal and Sindh, in Bengal and Sindh. Unlike in 1937, now the League clearly established itself as a dominant party among Muslims. In Punjab, a unist Congress Akali coalition under Khizr Hayat Khan was assumed power. Significant feature of the election क्या रहे होंगे. The election witnessed communal voting in contrast to the strong anti-British unity shown in various upsurges due to separate electorate and limited franchise for the provinces. Less than 10% of the population could vote. Less than 10% of the population could vote यहाँ पे. And for the Central Assembly, less than 1% of the population were eligible. तो मतलब पहले ही बेस साइज, मतलब बेस ही इतना छोटा रखा है, तो फिर कैसे ही ना. ठीक है, ये सब पूछ लेते कई बार. ठीक है, अब देखिए द कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, यूपीएससी में मल्टीपल टाइम, स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम, अलग अलग स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम. ठीक है ना. अब इसको आप फटाफट 3 स्टार मार्क कर लीजिए. ठीक है ना, इंपॉर्टेंट था वो ऊपर वाला भी, और अब ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट. ओके, राइट. अब पढ़ते कैबिनेट मिशन. The Attlees government announced in February 1946 the decision to send a high-powered mission to the 3 British cabinet members, Patrick Lawrence, Secretary of State for India, Stafford Cripps, President of the Board of Trade, and A.V. Alexander, First Lord of Admiralty, to India to find out ways that means for negotiated peace transfer of people. In way, Patrick Lawrence was the chairman of the mission. ठीक है ना, कैबिनेट मिशन का बारे में ओवरव्यू पढ़ लिया है. अब आगे पढ़ते हैं. ओके, वाई ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड इमिनेंट नाउ. ठीक है, क्यों भाई ब्रिटिश, अब ऐसा लग क्यों रहा था कि अब तो ब्रिटिशर्स का पतन होना ही है. ठीक है, वो है द सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्सेज इन द स्ट्रगल फॉर हेजेमनी वाज फेयरली एविडेंट बाय द एंड ऑफ द वॉर. नेशनलिज्म हैड पेनिट्रेटेड इनटू हिटर टू अनटच्ड सेक्शन ऑफ द एरिया. ये पहला रीजन था. ठीक है, मेंस के हिसाब से अच्छा है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. देयर वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म अमंग द ब्यूरोक्रेसी इन द लॉयलिस्ट सेक्शन बिकॉज द paucity of the Europe's ICS recruits and policy of Indianization had ended the British domination in ICS as early as the First World War, and by 1939 there existed a British-Indian parity. The long war had caused fearness and economic worries. ठीक है, now only a depleted, war-weary bureaucracy battered by the 1942 event remained. The British strategy on conciliation and repression had its limitation and contradiction. After the Cripps offer, there was little left to offer and conciliation except full freedom. ठीक है, when non-violent resistance was repressed with force, the naked force behind the government stood exposed. While if the government did not clamp down a sedition made the offer for truce, it was seen to be unable to wield authority and its prestige suffered. Effort to woo the Congress dismayed the loyalists. This policy of an unclear mix presented a dilemma for the services who nevertheless had to implement it. The prospect of Congress ministers coming to power in the provinces further compounded the dilemma. फिर क्या हुआ? Constitutionalism and Congress Raj had proved
to be a big moral booster and help in deeper penetration of the patriotic sentiment among the masses. ये सारे मेंस के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना. Demand for leniency of INA prisoners from within the army and the revolt of the RIN rating had raised fears that the armed forces may not be as reasonable if the Congress started a 1942 type mass movement, this time aided by the provincial ministers. The only alternative to any all of देखिए the only alternative to an all-out repression of a mass movement was an entirely official rule, which seemed impossible now because the necessary members and efficient officials were not available. ठीक है ना, ये व्यूज़ हैं, इसको आगे बढ़ता है. The government realized that a settlement was necessary for burying the ghost of the mass movement and for good future Indo-British relation. ठीक है. Now the overarching aim of the British policymakers was graceful withdrawal after settlement on the modalities of the transfer of power and nature of post-imperial India-Britain relation. ठीक है, ये रीज़न था. अब ऑन आई ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना, फिर आगे पढ़ेंगे. कैबिनेट मिशन प्लान आया, फिर उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे. द कांग्रेस डिमांडेड द पावर टू ट्रांसफर टू वन सेंटर. कांग्रेस का डिमांड क्या था, वन सेंटर होना चाहिए, ठीक है. एंड दैट माइनॉरिटीज डिमांड be worked out in the framework ranging from autonomy to Muslim majority provinces to self-determination or secession from the Indian Union, but only after the British left. ठीक है. The British bid for a united and friendly India and an active partner in defense and Commonwealth because a divided India would lack a defense and would be a bloat on British diplomacy. The British policy in 1946 clearly reflected a preference for a united India, in sharp contrast to the earlier declaration. On March 15, 1946, Prime Minister of Britain Clement Attlee said, though mindful of the rights of minorities, cannot allow a minority a place to place their veto on advance of majority. This was a far cry from Shimla conference where Wavell had allowed Jinnah to wreck conference. ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवर हैड अलाउड जिन्ना को कि भाई कितना भी कॉन्फ्रेंस करो, है ना, रैक द कॉन्फ्रेंस, मतलब खराब जो भी कैसे करना है करते रहो. कैबिनेट मिशन अराइव्स, ठीक है. अब कैबिनेट मिशन के बारे में अच्छे से आपको स्टेट पीएससी वगैरह ग्रिल करती रहती है, ठीक है. द कैबिनेट मिशन रीच्ड दिल्ली ऑन March 24, 1946. इट हैड प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन विद इंडियन लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज एंड ग्रुप्स ऑन द इशू. इंटरिम गवर्नमेंट, पहला क्या हुआ, interim government. Then second was principle and procedure for framing a new constitution giving freedom to India. As the Congress and the League could not come to any agreement on the fundamental issue of the unity on partition of India, the mission put forward its own plan for the solution of the constitutional problem in May 1946. थोड़ा आगे बढ़ा दिया. अब देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे कैबिनेट मिशन में. ओके, तो रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ अ फुल प्लेज पाकिस्तान. रिजेक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, फुल प्लेज पाकिस्तान रिजेक्टेड. The Pakistan so formed would include a large non-Muslim population, include 38% in the northwest and 48% in the northeast. The very principle of the communal self-determination would claim separation of Hindu majority Western Bengal and Sikh and Hindu dominated Ambala and Jalandhar division of Punjab. Already some Sikhs leaders were demanding a separate state if the country was partitioned. भाई सिक्स वगैरह जो थे, बाकी लोग भी, they were demanding for a separate state. Deep-seated regional ties would be disturbed if the Bengal and Punjab were partitioned. The partition would entail economic and administrative problems. For instance, the problem of communication between the western and the eastern part of the Pakistan. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. द डिवीजन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वुड बी डेंजरस. ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शंस. पहले सेक्शन होगा मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस है ये सब. और फिर है सेक्शन बी वाले आएंगे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है. और फिर सेक्शन 3 भी आएगा, सी भी आएगा, मतलब बेसिकली बंगाल एंड आसाम मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस. ठीक है, अब ये बंगाल और आसाम का जो है जुड़ गया है रिश्ता, अभी देखेंगे. मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस वगैरह थे वहाँ पे, ठीक है, बंगाल और आसाम. द 3-tier एग्जीक्यूटिव, मतलब अब इन द इसके मुस्लिम लीग उस पर ज़्यादा फोकस करने वाली है. 3-tier एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंशियल सेक्शन एंड यूनियन लेवल. 3 tier होना चाहिए.
A constituent assembly was to be elected by provincial assembly by proportional representation voting in 3 groups, general, Muslim and Sikhs. ठीक है ना, 3 ग्रुप कौन से बने, जनरल, मुस्लिम एंड सिख बनाए. दिस कंसिस्टेंट असेंबली वुड बी a 389 member body with provincial assembly sending 292, chief commissioners, provinces sending 4 and princely states around 39. ठीक है ना. This was a good democratic method, not based on weightage. In the Constituent Assembly, members from grouping ABC were to sit separately to decide the constitution for provinces and, if possible, for the group also. Then the whole Constituent Assembly, all 3 sections A, B and C combined, would sit together to formulate the Union Constitution. ठीक है ना. नहीं, ये प्लान बना, ये पूरा प्लान था. अब आगे बढ़ते हैं. कॉमन सेंटर वुड कंट्रोल डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स. इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट. द फेडरल स्ट्रक्चर वॉज एनफोर्स्ड फॉर इंडिया. फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है. कम्युनल क्वेश्चंस इन द सेंटर लेजिस्लेचर वर टू बी डिसाइडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ कम्युनिटी प्रेजेंट इन वोटिंग. Provinces were to have full autonomy and residual power. Full autonomy and residual powers. ठीक है. आप इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिए उस हिसाब से. ठीक है. Okay. Princely states were no longer to be under paramountcy of the British government. They were be free to enter into an agreement with successor government of the British government. ठीक है, important है. After the first general election, provinces were to be free to come out of a group, and after 10 years, a province was to be free to call for reconsideration of the group or the Union Constitution. Meanwhile, an interim government was to be formed from the Constituent Assembly. ठीक है ना. ये तक अभी तक यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. ओके. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉज. ठीक है. अलग अलग जो ग्रुपिंग अभी बनाई है तो उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन लिया है इन सब लोगों ने. कांग्रेस ईच पार्टी और ग्रुप looked at the plan for its own point of view. कांग्रेस ने क्या किया? To the Congress, the cabinet mission plan was against the creation of Pakistan, since grouping was optional. One constituent assembly was envisaged, and League had no longer veto. Veto नहीं था लीग के पास अब. ठीक है ना. ओके. Muslim League believed in Pakistan to be implied in compulsory grouping. मुस्लिम लीग को लगता था कि भाई पाकिस्तान तो होनी चाहिए. द मिशन लेटर क्लैरिफाइड दैट द ग्रुपिंग वाज कंपलसरी. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा भाई, देखते हैं. डिफरेंट पार्टीज ऑब्जेक्टेड टू द प्लान ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स. पहले कांग्रेस ने क्या बोला? प्रोविंसेस शुड नॉट हैव टू वेट टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू कम आउट ऑफ द ग्रुप. दे शुड हैव द ऑप्शन ऑफ नॉट ज्वाइनिंग अ ग्रुप इन द फर्स्ट प्लेस. Congress ruled provinces of Northwest Kashmir Province and Assam in mind, which had been included in the group B and C. ठीक है. Compulsory grouping contradicts the oft repeated instances of provincial autonomy. Right? Absence of provision of the elected member from the princely state in the Constituent Assembly. They could only be nominated by princes was not acceptable. लीग ने क्या बोला? ग्रुपिंग शुड बी कंपल्सरी विथ सेक्शन बी एंड सी डेवलपिंग इनटू solid entities with a view of future secession into Pakistan. The League had thought that the Congress would reject the plan, thus promoting the government to invite the League to form a interim government. Acceptance and rejection. तो फिर क्या होने, उसके बाद क्या हुआ? द मुस्लिम लीग ऑन June 6 एंड द कांग्रेस ऑन June 24, 1946 एक्सेप्टेड अ लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन. अब देखिए, मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक्सेप्टेड द लॉन्ग टर्म प्लान पुट फॉरवर्ड बाय कैबिनेट मिशन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. तो आप मना कर दो ज़्यादा नेशनलिज्म क्योंकि हम सब में है तो हमें लगेगा कि नहीं मना किया था. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. कुछ लोग में नहीं था. मुस्लिम लीग ने चाहती थे कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए. तो द मुस्लिम लीग ऑन June 6 एंड द कांग्रेस ऑन June 24, 1946 एक्सेप्टेड अ लॉन्ग टर्म प्लान टू पुट फॉरवर्ड बाय द कैबिनेट मिशन. 1946 में इलेक्शन वर हेल्ड इन प्रोविंशियल असेंबलीज एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जुलाई 10, 1946 में नेहरू स्टेटेड, वी आर नॉट बाउंड बाय अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, implying that the constituent assembly was a sovereign and would decide the rules of procedures. The big probability is that there would be no grouping as Northwest Frontier Province, and Assam would have objection to joining Section B and C. July 29, 1946, the League withdrew its application. The League withdrew its applications of the long-term plan in response to Nehru's statement and gave a call for direct action. लीग ने बोला डायरेक्ट एक्शन. किसने बोला? लीग ने बोला था, मुस्लिम लीग ने
मतलब वही डायरेक्ट एक्शन लेंगे फ्रॉम अगस्त 16 है ना टू अचीव पाकिस्तान। ठीक है, या ये पढ़ लेते हैं, वेवल्स ब्रेक डाउन प्लान। ठीक है, Wavell presented his plan to the cabinet vision 1946. May it visualized a middle course between repression and scuttle. This plan envisaged the withdrawal of the British army and the officials to the Muslim provinces, northwest frontier and northeast, and handing over the rest of the country to the Congress. Though suppressed by the cabinet mission plan, Wavell plan was an evidence of British recognition of the impossibility British recognition of the impossibility of suppressing any future Congress rebellion and desire in some high official circle to make our northern island of Pakistan. ठीक है, ये समझ गए क्या प्लानिंग करना चाह रहे थे उसके बिना। ठीक है, अब है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, कम्युनल होलोकॉस्ट एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। कम्युनल होलोकॉस्ट हो रहा था, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। इसको कम्युनल होलोकॉस्ट एंड द इंटरिम गवर्नमेंट को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।